1. Mobilization. हालत जंग लामबंदी तैयारी तंजीम फौज को हरकत में लाने का अमल फौजों का इस्तेमाल राय आम्मा की बेदारी Meaning, mobilization refers to the act of assembling and organizing resources, especially people, in preparation for a specific purpose, such as a military or political campaign. 2. Proliferation. किसी चीज की तादाद या मिकदार में अचानक इजाफा किसी खास चीज की एक बड़ी तादाद फैलाव तकसीर नमूद नशोनुमा फूटने का अमल खलियों की तकसीम से किसी अमल का बढ़ना Meaning, rapid increase in the number or amount of something. 3. Generational. नस्ली पुश्ती मुख्तलिफ नस्लों से मुतालिक लोगों के गिरोह खानदान के अरकान जो एक ही उम्र के आसपास हैं Meaning, generational refers to something that is related to or characteristic of a particular generation or age group. 4. Fissure. दज चैक शिगाफ दरार झरी अलहदा होने वाली जगह Meaning, fissure refers to a narrow opening, crack, or split, especially in rock or the Earth's surface. 5. Devolution. विरासत इंतकाल जायदाद तफवीज इख्तियारात सपुर्दगी Meaning, devolution refers to the transfer of power or authority from a higher level to a lower level, such as from a central government to a local government. 6. Insightful. आगाह बसीर साहिब बसीरत साहिब इदराक बसीरत शियार दिक्कत नजर का हामिल Meaning, insightful refers to having or showing a deep understanding or perception of something. 7. Coup. कारगर अमल कामयाब चाल हुकूमत का तख्ता उलटना बगावत चोट ज़र्ब भरपूर वार अचानक गैर कानूनी अक्सर पुरतशद्दुद हुकूमती इक़्तिदार पर कब्जा खास तौर पर फौज के एक हिस्से के ज़रिया Meaning, coup refers to a sudden and often violent overthrow of a government or ruling authority, usually carried out by a small group of people. 8. Patronage. सरपरस्ती दस्तगीरी ताईद हिमायत परवरिश पनापुश्ती नवाजिश मुआवनत Meaning, patronage refers to the support or encouragement of a patron towards an organization, individual, or group. 9. Landholding. जमींदारी पटादारी अर्जी मलकियत Meaning, landholding refers to the ownership or possession of land. 10. Electable. काबिल इंतखाब किसी सियासतदान या सियासी जमात का ऐसी खुसूसियात का हामिल होना जो इंतखाबात में जीतने का इम्कान मुमकिन बनाता है फैसला इंतखाब करने से मुतालिक खास तौर पर किसी खास काम के लिए किसी शख्स का इंतखाब वोट न की तरफ से Related to making a decision or choice, especially the choice of a person for a particular job, by voting. 11. Largesse. इनाम व इकराम नक़द तहाइफ की सूरत में फयाजी दरिया दिल्ली तोहफा Meaning, the act or quality of being generous with money, money that you give to people who have less than you. 12. Myth. फर्जी दास्तान परियों और दीवोहे के अफसाने वहमी बातें ख्याली बातें Meaning, a myth is a traditional story, usually involving gods or heroes, that explains the beliefs, customs, or natural phenomena of a culture. 13. Agitation. इश्तियाल खलबलीत मुजाहिया पेच उताब जिस्मानी हलचल हैजान जोश तहलका तहरीक ख्यालात का अलजे Meaning, a state of anxiety or nervous excitement. 2. The arousing of public concern about an issue and pressing for action on it. 14. Revert. वापस आ जाना पलट आना फेर देना उल्टा देना तनज़्ज़ुली होना ज़वाल आना पस्त होना वापस चले जाना बाज आना Meaning, revert means to return to a previous state, condition, or subject.
15. Stunted. रुका। गैर कामिल नमू वाला एक कोटा टिटरा मामूल के साइज में बढ़ने या तरक्की करने से रोक दिया गया। Meaning, prevented from growing or developing properly due to malnutrition or other factors. 16. Shrink. सुकड़ना, छोटा होना, सिमटना, ठिठरना, जेजेकिना, कितराना, कथा होना, सुकड़ने का अमल। Meaning, verb, to become or make smaller in size, amount, or value. 17. Estrangement. कशीदगी, कद्दूत, रंजिश, किट्टी कत ताल्लुक। Meaning, the state of being distant or separated, especially in a personal or emotional relationship. 18. Ambitious. ख्वाहिशमंद, आरज़ूमंद, मुश्ताक, जातलब, आली हिम्मत, बुलंद हौसला, हौसलामंदाना, जरी, जुरत आमेज अक़दाम. Meaning, having or showing a strong desire and determination to succeed or achieve something. 19. Avenue. रास्ता, रा, सड़क, खियाबान, रास्ता, गुजरगा. Meaning, a street, often a wide one, in a city or town. 2. A method or way of doing something. If there was one reading recommendation from the previous week, it was a piece by Bilal Jilani in the news. The executive director of Gallup Pakistan, Jilani, has written more than once on this subject, as have others, but he seems to have a far better grasp. The issue is the changing nature of Pakistani politics, the polarization and the role of the youth. Perhaps, I shouldn't call it an issue. Identifying this new mobilization, he explains that from 2013 onwards, Pakistani youth have been increasingly participating in the electoral exercise. He puts it down to two main factors: the expansion of social media and the proliferation of education, leading to a more aware, more politicized youth. While the point about social media has been made time and again, it would be worthwhile to quote Jilani on the latter. Before 2002, there were less than 200,000 undergraduate students in universities across Pakistan. By the end of that decade, there were more than 2 million. Similarly, within these 2 decades, the average years of education that a Pakistani child could expect to receive rose from less than 3 years to almost 8 years. Unlike ever before in our history, at least 85% children have been to school at some point in their lives. Jilani then goes on to argue how this has created the present conflict in the country, where this youth feels the status quo is preventing them from reaching their goals. And second, that this generational conflict is also causing fissures within institutions. The political system needs to be broadened through further devolution. Insightful writings allow the rest of us to use them as a springboard. And it was no different with Jilani's piece. While he argues for the need for a larger, broader dialogue to engage the youth, he also argues for reform of the political system, and it is this latter, which we may need to focus on. For, as he too points out, the present political system, set in place decades ago, is near collapse, to put it gently. Set in place after the Zia coup, it aimed in some ways to stem the popular mobilization, which had led to the rise of the PPP. But a coup, especially in Pakistan, cannot stop political activity altogether. And therefore, the political processes set in place by the military regime tried to counter the popular mobilization by a state patronage system. In this system, the earlier strongmen who enjoyed control through their landholdings, for instance, now turned brokers who managed the state patronage for their voters and supporters. And to a large extent, in Punjab, this became the class which formed the basis of the PMLN. Indeed, many of those who had witnessed the mobilization of the 1970s have criticized more than once the introduction of money, including the use of development funds, which overshadowed the place of ideology in politics during the 1980s. But that was the whole point. It was meant to blunt ideology and popular mobilization.
Electables were born, who used access and influence in the shape of fana, catchery and state employment, to win over votes. In addition, the development model meant local projects created jobs as well as a share in public largesse for those who would pay back in kind when politicians ran electoral campaigns or needed other favors. It is this model which explains a number of myths or assumptions about the PMLN and its supporters, such as the Kada Hai to Lagada Bihai or the idea that the party's voter would not attend rallies or join agitations but turn out to vote on election day. This model stayed dominant for decades and also allowed the specific manner in which the Musharraf regime managed the 2002 election, where an entire party was more or less hijacked to form the King's Party, only to revert to its original leadership post-2008. This was not a strategy that Zia could have adopted in 1985 or which seems possible now. However, over time, this model has become less effective, as the number of voters is growing and the stunted economy means that state patronage simply cannot offer more. The development budget cannot stretch infinitely, it is perhaps shrinking in real terms. The situation is no different with employment in the state sector. According to Jilani, older parties cannot recognize the youth's estrangement. They perhaps can, but their political model cannot afford to address this estrangement. The PTI sees this and offers a solution in vague terms of advancement for all. This is also reflected in its flagship health card program, which is universal rather than designed in a way to limit it in a manner in which the beneficiaries can be chosen. This is also why the PTI's promise of local government had proved popular. In a political system limited to the national and provincial assemblies, the politically ambitious youth had limited avenues of growth as electables and their families tend to dominate party tickets. A fully empowered LG system could open doors. But those who are part of the status quo have resisted it, creating the tensions between the traditional electables who joined PTI and the party's supporters who continue to push for local government. The point here is not to undermine anything Jilani has said, but simply to add to the debate. Where he counsels a dialogue, he also suggests the reform of the political system, and it is here that energies will have to be focused. The political system needs to be broadened through further devolution, leading to empowered local governments. The fiefdoms, which are the provincial governments, have to be weakened. And the economy has to grow, for which politics need stability rather than 1990s-style interventions. And it is here perhaps the generation gap within institutions, be it political parties or elsewhere, is relevant. For the younger generation, change is linked to a better future while the older ones seek the comfort of stability, which is no longer possible. Change is rarely ever easy, but neither can it be blocked infinitely. The writer is a journalist. Published in Dawn, April 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. अगर पिछले हफ्ते की एक भी सिफारिश थी तो वो दी न्यूज़ में बिलाल गिलानी का एक मजमून था। गैला पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिलानी ने दूसरों की तरह इस मौजू पर एक से ज़ायद बार लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी समझ बहुत बेहतर है। मसला पाकिस्तानी सियासत की बदलती हुई नौयत, पोलराइजेशन और नौजवानों के किरदार का है। शायद मुझे इसे मसला नहीं कहना चाहिए। इस नई तहरीक की निशानदेही करते हुए वो वजाहत करते हैं कि 2013 के बाद से पाकिस्तानी नौजवान इंतखाबी मशकों में तेजी से हिस्सा ले रहे हैं। वो इसे दो अहम अवामिल पर डालते हैं: सोशल मीडिया की तौसी और तालीम का फैलाव, जिसकी वजह से ज़्यादा बाशूर, ज़्यादा सियासत-ज़दा नौजवान पैदा होते हैं। अगरचे सोशल मीडिया के बारे में बार बार बात की जाती रही है, लेकिन गिलानी का हवाला देना मुनासिब होगा। 2002 से पहले पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्मों की तादाद 200,000 से भी कम थी। इस दहाई के आखिर तक 2 मिलियन से ज़्यादा थे। इसी तरह इन 2 दहाइयों के दौरान एक पाकिस्तानी बच्चे की तालीम के औसत साल 3 साल से भी कम से बढ़कर तकरीबन 8 साल हो गए हैं। हमारी तारीख में पहले के बरक्स कम से कम 85% बच्चे अपनी जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर स्कूल गए हैं।
इसके बाद गिलानी ये दलील देते हैं कि किस तरह इसने मुल्क में मौजूदा तनाज़ा पैदा किया है, जहां ये नौजवान महसूस करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल उन्हें अपने अहदाफ तक पहुंचने से रोक रही है। और दूसरा ये कि यह नस्ली कशमकश भी इदारों के अंदर दरारें पैदा कर रही है। सियासी निज़ाम को मज़ीद मुंतकली के ज़रिए वसी करने की ज़रूरत है। बसीरत अफरोज़ तहरीरें हम में से बाकी लोगों को उन्हें स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं, और ये गिलानी के टुकड़े से मुख्तलिफ नहीं था। अगरचे वो नौजवानों को शामिल करने के लिए एक बड़े और वसीतर मुकालमे की ज़रूरत पर जोर देते हैं, लेकिन वो सियासी निज़ाम की इस्लाह के लिए भी दलील देते हैं, और ये मुअख्खर ज़िक्र है जिस पर हमें तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जैसा कि वो भी बताते हैं, दहाइयों पहले कायम होने वाला मौजूदा सियासी निज़ाम अब ज़वाल के करीब है। ज़िया बगावत के बाद कायम होने वाली इस तहरीक का मकसद कुछ तरीक़ों से अवामी तहरीक को रोकना था, जिसकी वजह से पी उभरी थी। लेकिन बगावत, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकती। लिहाजा फ़ौजी हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा सियासी अमल ने रियासती सरपरस्ती के निज़ाम के ज़रिए अवामी तहरीक का मुकाबला करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर इस निज़ाम में पहले के ताकतवर लोग जो अपनी ज़मीनों के ज़रिए कंट्रोल हासिल करते थे, अब बन गए हैं जो अपने वोटरों और हामियों के लिए रियासती सरपरस्ती का इंतज़ाम करते हैं। और बड़ी हद तक पंजाब में ये वो तबका बन गया जिसने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी। दर हकीकत जिन लोगों ने 1970 की दहाई के मुतहर्रिक होने का मुशाहिदा किया था, इनमें से बहुत से लोगों ने एक से ज़्यादा बार रकम मुतारफ कराने पर तनक़ीद की है, जिसमें तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल भी शामिल है, जिसने 1980 की दहाई के दौरान सियासत में नज़रिए की जगह को ढांप दिया था। लेकिन ये पूरी बात थी, इसका मकसद नज़रिया और अवामी तहरीक को कमज़ोर करना था। इलेक्टेबल्स पैदा हुए जिन्होंने वोट हासिल करने के लिए थाना, कचहरी और रियासती रोज़गार की शक्ल में रसाई और असर और रसूख का इस्तेमाल किया। इसके अलावा तरक्याती और मॉडल का मतलब यह था कि मकामी मंसूबों से रोज़गार के मौक़े पैदा हुए और उन लोगों के लिए अवामी वसाइल में हिस्सा भी पैदा हुआ जो सियासतदानों की इंतखाबी मुहिम चलाने या दीगर मुराद की ज़रूरत पड़ने पर इसका बदला अदा करेंगे। ये वो मॉडल है जो मुस्लिम लीग नून और उसके हामियों के बारे में बहुत सी खुराफात मफरूज़ों की वजाहत करता है, जैसे खाता है तो लगता भी है, ये ख्याल के पार्टी का वोटर रैलियों में शिरकत नहीं करेगा, एहतजाज में शामिल नहीं होगा, बल्कि इंतखाबात के दिन वोट डालने के लिए निकलेगा। ये मॉडल कई दहाइयों तक गालिब रहा और मुशर्रफ हुकूमत ने 2002 के इंतखाबात में जिस खास अंदाज में कामयाबी हासिल की, इसकी भी इजाज़त दी गई, जहां कम व बेश एक पूरी पार्टी को हाईजैक करके बादशाह की पार्टी तश्कील दी गई, सिर्फ 2008 के बाद अपनी असल क़यादत की तरफ लौटने के लिए। ये ऐसी हिकमत अमली नहीं थी जो ज़िया 1985 में इख्तियार कर सकते थे या जो अब मुमकिन दिखाई देती है। ताहम वक्त गुजरने के साथ ये मॉडल कम मुअस्सिर हो गया है, क्योंकि राय दहिंदगान की तादाद में इजाफा हो रहा है और कमज़ोर मईशत का मतलब है कि रियासती सरपरस्ती इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तरक्याती बजट लामहदूद हद तक नहीं बढ़ सकता। ये शायद हकीकी मानों में सुकड़ रहा है। रियासती शोबे में रोज़गार के साथ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। गिलानी के मुताबिक पुरानी जमातें नौजवानों की अलहदगी को तस्लीम नहीं कर सकती। वो शायद कर सकते हैं, लेकिन उनका सियासी मॉडल इस दूरी को दूर करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई इसको देखती है और सबके लिए तरक्की के मुबहम अल्फाज में एक हल पेश करती है। इसकी अक्कासी इसके फ्लैगशिप हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में भी होती है, जो इस तरह से डिज़ाइन करने के बजाय आलमगीर है कि उसे इस तरह से महदूद किया जाए जिससे फ़ायदा उठाने वालों का इंतखाब किया जा सके। यही वजह है कि पीटीआई का बल्दियाती हुकूमत का वदा मकबूल साबित हुआ था, क्योंकि कौमी और सूबाई असेंबलियों तक महदूद सियासी निज़ाम में सियासी तौर पर पुरजोश नौजवानों के पास तरक्की के मौक़े महदूद थे, क्योंकि इलेक्टेबल्स और उनके अहल खाना पार्टी टिकटों पर हावी होते हैं। एक मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार एलजी सिस्टम दरवाजे खोल सकता है, लेकिन जो लोग स्टेटस को का हिस्सा हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है, जिससे पीटीआई में शामिल होने वाले रिवायती इलेक्टेबल्स और पार्टी के हामियों के दरमियान तनाव पैदा हो गया है, जो मकामी हुकूमत पर जोर दे रहे हैं। यहाँ बात ये नहीं है कि गिलानी की किसी भी बात को नज़रअंदाज न किया जाए, लेकिन सिर्फ बहस में इजाफा करने के लिए।
जहां वो मुकालमे की सलाह देते हैं वहां वो सियासी निज़ाम की इस्लाह की भी तजवीज़ देते हैं और यही तवानाइयों पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। सियासी निज़ाम को मज़ीद मुंतकली के ज़रिए वसी करने की ज़रूरत है जिससे मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जा सके। सूबाई हुकूमतों की जागीरों को कमज़ोर करना होगा और मईशत को तरक्की करनी है, जिसके लिए 1990 की दहाई की तर्ज की मुदाखलत के बजाय सियासत को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और शायद यहाँ इदारों के अंदर, चाहे वो सियासी जमातें हों या कहीं और, नस्ली फ़र्क अहम है। नौजवान नस्ल के लिए तब्दीली एक बेहतर मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है, जबकि उम्र रसीदा अफराद इस्तेहकाम का सुकून चाहते हैं जो अब मुमकिन नहीं है। तब्दीली शाज़ व नादिर ही आसान होती है, लेकिन न ही इसे लामहदूद तौर पर रोका जा सकता है। मज़मून निगार एक सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 25 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.